startups, entrepreneurship, starting your own new business. Join me every week as we dive into stories, topics, and advices from the top founders, innovators, the crazy ones, the misfits, the troublemakers. Every Saturday at 4 p.m. I'll see you there. बट इन पाकिस्तान प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास टेक्निकल स्किल्स नहीं सिखाए जाते. हमने अंग्रेजी के पीछे दौड़ा दिए. So everybody has their own pace. So digital is not that easy. People think कि यार मैंने वो एक कमर्शियल बना लिया है स्टिल पिक्चर के साथ 10 सेकंड का 20 सेकंड का और मैं अपनी कैंपेन रन कर सकता हूँ. मैंने फेसबुक पे बूस्ट लगा दिया. इट इज़ नॉट दैट. 30 seconds में अगर आप डिफाइन ही नहीं कर सकते अपने प्रोडक्ट को, how are you going to sell it? If you cannot give it 30 seconds, you cannot explain it. That means अभी उसमें काम बाकी है. See, there's always two kind of people. एक वो होते हैं जो लोगों की मिस्टेक से सीखते हैं, एक वो होते हैं जो गलती करके सीखते हैं. If you have skill, you will find a way to get up. मार्केटिंग टूल्स होते क्या है, किस तरह उनको इस्तेमाल किया जाए. I want to go over with you initially मार्केटिंग टूल्स कौन से इस्तेमाल किए जा सकते हैं. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम साद अल्लाहवाला है and we're back with another podcast. आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं who is a mentor of mine. He has been involved with Startup Granny as well. He is now has been working for a while at the largest TV network of Pakistan. And जब भी इनसे मिलो, जब भी इनसे बात करो, तो इतना कुछ सीखने को मिलता है. He's extremely educated and extremely smart. So today I'm glad to have Malik bhai over, Malik Ali Bejar, who is the Vice President at Bol Networks. Sorry, confusion थोड़ी सी हो गई. And he is a head of sales and marketing. But he told me that there's so much more going on क्योंकि Vice President की position comes with a lot of विरासत पे बहुत सारी चीज़ें और साथ आती है. So we're going to learn more about that. First of all, thank you for coming. Thank you for having me, Saad. Thank you for having me as well before, because he invited me on board my first TV appearance, and again really glad that you did that. And no, you're helping the people, you're helping them grow, you're helping the entrepreneurs. So at the moment our country needs that, and the more entrepreneurs we have, I think the more chances of export increasing will go definitely up. So thanks for coming over and thank you for having me. Thank you. So I want to dive into the amazing conversation that we were just having, but I want to know a little more about you, your journey. Where did you start? Where have you learned? I had a very small journey. I started in 2005 with City FM 89. Worked there as a producer. Then आपकी आवाज़ ज़्यादा अच्छी है तो उसमें मतलब RJ नहीं बने? नहीं. never. So worked there as a producer. Worked on a couple of shows there. Back then, there used to be a CEO called Nameen Chinoy in FM 89. She was the one who directed me towards sales. She found the skill I had. I'll be honest, I was not able to tap in that. She was the one who identified it. She transferred me to sales. Then I had a 5-year-long journey. Wow. I had a very good time. I had good mentors there. Had a lot of people to work with. Had fun. Nameen helped me a lot. Then from FM 89, I moved to Hum Network. So I worked there. I was in Hum TV looking after the fashion shows and the events. Ooh. And also their channel called Hum Sitare and Style 360. Over there, I was mentored by Arif Hussain. He's currently Chief Operating Officer for the Hum Network, and I learned a lot from him. He taught me a lot of traits of the industry. While doing all of that, I was also doing my masters. And masters I did from Keat. I did it in the evening. Because bachelor's कहाँ गया था वो? Bachelor's I did from PIMSAT. So while I was doing my bachelor's, I was also an employee of FM 89. Wow. So I had this leeway of skipping work and going to school until unless my targets are done. So वो एक credit है नमीन का जो उन्होंने मुझे इजाज़त दी थी, जो मैं करता रहा, and I'm always grateful to her, and I always appreciate what she has done for me. Then I moved to Hum Network. Arif Hussain trained me. He taught me everything I know, from on ground to events to managing a project. So project leads वगैरह सब कुछ उन्होंने train किया proper, and I think whatever I am right now is thanks to both of them and the family support I had. Then from there, in 2018, I moved to Bol Network. Right now, I think it's been exactly 4 years.
Wow. I joined on 20th December 2018. तो बस 20 दिन में तो 20 दिन में इंशाल्लाह 4 साल हो जाएंगे. So I joined them. इधर जो है slowly and gradually we moved forward. We turned around our wheels. We worked on Bol's content. We worked on Bol's marketing and digital and sales. So अब माशाल्लाह से इस वक्त we are one of the top networks and doing good, and we believe we can move forward with that also. और काफ़ी ज़्यादा काम है जो करना है वो करेंगे इंशाल्लाह और बेहतर करेंगे. And बस डिजिटल यहीं पे रहते हुए बोल में रहते हुए I went to IBA. I did my diploma in digital marketing from IBA. So yeah, so I believe the learning never stops. You need to keep on learning. So I did that. Then while there was COVID, I did a Coursera course from University of Huddersfield. Okay. It is UK based, but I did online Coursera course. तो वो वहाँ से मुझे उसका certification मिल गया for brand management and aligning. Interesting. So वो किया. Then there's a thinkbox.tv एक है जो ग्रुप है एंड मीडियाकॉम वगैरह की जो उनकी स्टडीज वगैरह करती है. So they have a course called TV Masters. So I did that. उसकी certification online की. These are some things which anyone and everyone can learn because the courses I'm telling you these are free courses. The Google के analytics हो गए, this is free. बिल्कुल. TV Masters is free. So I would suggest anyone and everyone who wants to showing pictures that match. तो Google को आपने बोला ना वो जाग गई. So anyone and everyone who wants to work in digital and wants to like go better अपने आप को और बेहतर करना चाहता है, so they can go on YouTube, they can go online, they can learn those and give these exams and give these papers, certifications ले free of cost है. बिल्कुल. So these will teach you a lot because as we were discussing, we want to talk about digital and TV. So digital is not that easy. So people think यार मैंने वो एक commercial बना लिया है स्टिल पिक्चर के साथ 10 सेकंड का 20 सेकंड का और मैं अपनी कैंपेन रन कर सकता हूँ, मैंने फेसबुक पे बूस्ट लगा लिया. इट इज़ नॉट दैट. इट इज़ नेवर दैट. the advertisement you're doing, it needs a complete research कि भाई कौन हो तुम, कहाँ से आए हो, तुम्हारा ब्रांड क्या है, what is your brand persona. So people have issues identifying their brand persona. बिल्कुल. So उनको ये नहीं पता होता, वो they think कि जी हमारा जो ये ब्रांड है क्योंकि घर वालों ने बोला है या दोस्तों ने बोला है तो इसकी फॉलोअर्स यही है. So you need those focus groups. You need to have those. I think people, so whenever anyone's telling me or my dad even about a product, वो straight away elevator pitch मांगते हैं कि भाई 30 seconds में अगर आप define ही नहीं कर सकते अपने product को, how are you going to sell it? ऐसा ही है. So basically before going anywhere, you coming to anyone, VC or anyone, you need to know your product in and out. If you cannot give it 30 seconds, you cannot explain it, that means अभी उसमें काम बाकी है, उसमें अभी और research बाकी है. So you need to learn that. You need to explore that. You need to fail in that. Because once you will start failing in that, then only you will be able to give your elevator pitch with 30 seconds. बिल्कुल ऐसे ही है. Awesome. So as you said you did all of these courses online, what kind of do you see a difference कि हमारे लोगों को एक human touch की बहुत ज़रूरत लगती है, और आपने कहा कि आपने डिप्लोमा IBA से भी किया, and now what I've noticed is कि अब कभी भी जाओ ना LinkedIn पे and I'm looking at someone's profile, उसमें आ रहा होता है you guys went to the same university. अब मैं MIT गया, वहाँ जाके कोर्स किया, फिर आया, and people have done them online and then now they know the same things. Yeah. So see, there's always two kind of people. एक वो होते हैं जो लोगों की मिस्टेक्स से सीखते हैं, एक वो होते हैं जो गलती करके सीखते हैं. So similarly इसमें भी एजुकेशन में भी there are two kind of people. एक जिसको वहाँ जाके फिजिकल बैठ के दोस्तों के साथ कन्वर्सेशन करके चीज़ें समझ के करनी होती हैं. एक वो होता है जो लेक्चर सुन के उसके ऊपर रिसर्च करके पे करता है. सो इवन व्हेन यू आर गोइंग इन MIT sorry, when you are going in MIT, there will be people who will be sitting in library after the lecture. बिल्कुल. ठीक है, those guys they can do it online. But the guys who want to sit in a group, जो group sessions करते हैं, नहीं यार you tell me what do you understand, उनके लिए फिर जाना ज़रूरी है. So everybody has their own pace. So I'm one of those who want to go there, but when there were things that I actually knew that I can't afford or I can't go there,
जैसे ड्यूरिंग कोविड a lot of people did online courses and then there came a shift कि लोगों को पता चला कि जी इसकी वजह से भी बहुत से फ़र्क आ जाते हैं. So instead of doing courses at local centers, if you do them at ऑनलाइन कोर्सेज, क्योंकि हार्वर्ड है या MIT है, इन सब के कोर्सेज ऑनलाइन पढ़ें तो वहाँ से उनकी चीज़ें सीखें. वी एक्चुअली स्टार्टिंग आवर ओन प्रोग्राम हियर. इट्स कॉल्ड CS50. इट्स बाय हार्वर्ड एंड इट्स प्रोग्रामिंग फॉर एनीवन. So a 60-year-old and a 12-year-old, they all can do it. And CS50 की basis पे jobs set है market में जो आपको फौरी मिल जाती हैं if you done that course. This point you just said, it's for everyone from age 18 to 60. This is 12 to 60. So this is a very big issue in Pakistan. So हमारे पास issue क्या आता है? हम एक A levels के बच्चे को या इंटर करे हुए बच्चे को एक्सपेक्ट करते हैं कि इसको पता होना चाहिए इससे बड़े को डॉक्टर बनना है या इससे बड़े को इंजीनियर बनना है. अगर उसने इंटर करने के बाद फैसला किया नहीं यार मुझे इंजीनियर तो बनना नहीं है, मुझे तो डॉक्टर बनना है, या मुझे डॉक्टर नहीं बनना, मुझे तो इंजीनियर बनना है, देन वी कम बैक एंड से कि नहीं एक काम करें आप इंटर के पेपर वापस दें. हाँ, सो इफ़ यू आर प्री मैट स्टूडेंट and you want to be enrolled in bachelor's in engineering, you have to go back and give your engineering के पेपर. हैं? या अच्छा, जैसे सिर्फ हाई स्कूल डिग्री नहीं होती? नहीं पाकिस्तान में ये नहीं है ना. So A levels पे yes you have. नहीं, I don't know. I haven't even done my O levels. मैं तो और पूछ रहा हूँ. So पाकिस्तान से बाहर they don't care कि you're a pre-med background. Normally उधर तो ये होता ही नहीं है. What they do is, the best thing I love about them is they teach you technical skills. हाँ. ठीक है ना. They will tell you to have a hardware class. They will go have a software class. They go have a technical class. Go have language classes. So these courses they prepare you for life. So when you watch an English movie, a Hollywood movie, you see a guy with his son making a car because he's learned that in his high school. Right. So ये engine कैसे बनेगा? He have learned that in his high school. Though that's not his career. हाँ. ठीक है. But they gave him that skill. For instance, खुदा ना खास्ता, he loses something, he is not able to perform. He ends up getting some kind of a job. बिल्कुल ऐसे ही. But in Pakistan problem ये है कि हमारे पर टेक्निकल स्किल्स नहीं सिखाए जाते. हमने अंग्रेजी के पीछे दौड़ा दिए कि भाई इंग्लिश जो अच्छी बोलता है वो परफेक्ट है. बिल्कुल. तो हमें वो चीज़ करेक्शन की ज़रूरत है. सो अगेन एज आई वाज सेइंग, प्री मेड बैकग्राउंड हम कहते हैं जी मैट्रिक में देयर आर 3 sections, कॉमर्स एंड साइंस. हाँ, कॉमर्स, सॉरी 2 sections, कॉमर्स एंड साइंस. सो साइंस वाला इंजीनियरिंग के भी कोर्सेज पढ़ेगा, फिजिक्स वगैरह, एंड मेडिकल की भी पढ़ेगा. कॉमर्स वाला सिर्फ मैथ्स एंड एड मैथ्स वगैरह पढ़ेगा. देन यू कम टू इंटर. इंटर पे आगे हमने और डिवाइड कर दिया, कंप्यूटर साइंस, प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल. सो ये प्री मेडिकल होता क्या है भाई? सो व्हाट दे डू इज दे टेल यू टू लर्न अबाउट बॉटनी इन प्री मेडिकल. बॉटनी पढ़ेंगे, बायोलॉजी पढ़ेंगे, जूलॉजी पढ़ेंगे जी. सो ये सारी चीज़ आपने पढ़नी, जूलॉजी पढ़नी है, बॉटनी पढ़नी है, फिजिक्स पढ़ना है. But their more concentration will be on botany and zoology. Engineering side पे their concentration will be on more engineering. So जब मैं bachelor's करने जाऊँगा and मैं decide करता हूँ कि मुझे engineering करनी है, तो they will say I'm sorry, you have to do prerequisites. Okay. And those prerequisites are your pre-engineering courses. So अब 1 साल बैठो, privately वो पेपर दो, अब 1 साल बाद आना. अच्छा, so my friend went to a university in somewhere in Massachusetts. अब उसका जो पहला था, पहले उसने क्या किया, उसने जो हाई स्कूल डिग्री थी वो उसने जंप करके, क्योंकि उसने कहीं और से पढ़ा था, उसने 1 साल जो है वो प्री यूनिवर्सिटी कोर्स जो भी था, लेकिन उसमें जो आपने कहा जैसे जूलॉजी पढ़ेगा या बॉटनी पढ़ेगा, उसने स्पेसिफिकली जो उसकी यूनिवर्सिटी में पढ़ना था उसने वही पढ़ा और उसकी बेसिस पे उसको हाई स्कूल डिग्री ट्रेन्ड हिम ना. दे गेव हिम उसको कहते हैं आई फॉरगॉट द नेम, फाउंडेशन कोर्स. हाँ, फाउंडेशन कोर्स. फाउंडेशन कोर्स में क्या होता है, दे टेल यू कि ठीक है, यू आर गेटिंग एनरोल्ड इन द यूनिवर्सिटी, बट व्हाट यू विल डू अ 0 semester. दैट 0 semester में हम आपको ट्रेन करेंगे सेमेस्टर 1 के लिए कि आपके पास उसकी नोहा आ जाए. सो एग्जांपल, इफ आई एम अ प्री मेड स्टूडेंट एंड इफ आई गो एंड से कि मुझे ACCA करना है, हाँ, फॉर मी ACCA इज अ न्यू बॉल गेम बीइंग अ प्री मेड. राइट. बिकॉज मुझे नहीं पता डेट क्या होता है, मुझे नहीं पता क्रेडिट क्या होता है, मुझे नहीं पता बैलेंस शीट कैसे बैलेंस होगी.
So उसके लिए foundation course makes sense, but you telling me to go back, do all those courses which I have not done because कोई 5 या 4 courses हैं, तो that is wrong because I will be wasting 1 year of my life. Right. Awesome. So going back to our main topic, which is marketing. I mean, we talked about a lot about degrees और काफ़ी सारी debate है कि degree होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए. It's a long debate and उसमें जाना भी नहीं चाहिए. होनी मेरे ख्याल से तो You should have the skill. skill होनी चाहिए. Skill And होनी then चाहिए. जैसे what Ali Bhai did was he was working and got a degree at the same time, and I think that's the best thing. I mean, if I had क्योंकि मेरी job जो है वो बहुत unstable है, मेरा ups and downs बहुत हैं, so it requires 15 hours a day. But अगर मेरी एक stable job होती है, I would definitely go and get a online degree. Even अब तो virtual university है, बहुत सारे हैं, वो degree online मिल जाती है, and कुछ हो ना हो एक हल्का सा एक फायदा हो ही जाता है कहीं ना कहीं से. In Pakistan, yes, there's a lot of profit being having a degree. I think अमेरिका में भी कोई हो ना तो भी मास्टर्स लेकिन अमेरिका में एटलीस्ट you know you can get an odd job. हाँ. पाकिस्तान में there's no concept of doing an odd job. वो हमारे कम्युनिटी बिल्डर क्या होता है? ये कम्युनिटी बिल्डर वाली जॉब क्या होती है? कम्युनिटी क्या होती है? वो जो आजकल नहीं लोगों की कम्युनिटी सादा पे में लोग कम्युनिटी मैनेजर्स और ये सब होता है. Basically they're doing listening tools use कर रहे हैं, calling themselves community manager, but no. So again I said कि आपके पास skill होने चाहिए. That is it. If you have skill, you will find a way to get up. Perfect. And that's something that you can get through these online courses, and again diploma courses have helped so much. The main thing that there is in the market now is कि marketing tools होते क्या हैं और किस तरह उनको इस्तेमाल किया जाए. I want to go over with you कि जी initially marketing tools कौन कौन से इस्तेमाल किए जा सकते हैं. Because बड़ी कंपनी है तो वो जाएगी टीवी चैनल के पास, छोटी कंपनी ये कुछ वो बने हुए हैं, कुछ माइंडसेट्स बने हुए मार्केट में कि जी ये ऐसे ही होता है, या बिलबोर्ड है तो कोई ये बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता, या रिक्शे के पीछे ब्रांडिंग नहीं की जा सकती, या फेसबुक पे ऐड लगाने के लिए ये चाहिए होता है, ये नहीं चाहिए होता. तो इन योर ओपिनियन व्हाट रियली इज मार्केटिंग एंड व्हाट आर द टूल्स अवेलेबल इन द मार्केट नाउ? So बहुत मुश्किल, मैं ब्रॉड हो गया, बहुत ब्रॉड सवाल हो गया, लेकिन व्हाट इज मार्केटिंग? Let me answer it one by one. So marketing is, to be put it in simple words, it is an art to making a person buy your product. Right. ठीक है ना. एक तरीका कि वो सामने वाला जो है इंस्टेड ऑफ डिजायर वो उसका वांट हो जाए कि यार मुझे चाहिए ये. ठीक है ना. सो दैट इज मार्केटिंग, टू मेक योर प्रोडक्ट कि वो सामने वाले की डिजायर चाह बन जाए कि मुझे चाहिए भाई, जरूरत नहीं है मेरी लेकिन मुझे चाहिए. That is marketing. Candyland bubbly. Yeah. So exactly. से मतलब So that is marketing. But you saying कि it's a myth, it's a big myth कि only big brands can afford TV. I'm sorry, it is not true. It is not like that. Or saying कि rickshaw पे brand करना is not convenient. I'm sorry, that is not again true. It is all about your campaign, your product, your brand safety, your brand equity. So these are the things you need to look after. So first of all, you need to go and see your brand safeties. कि आप अपने आप को किसी भी ऐसी चीज़ के साथ एसोसिएट नहीं करेंगे जिससे आपका ब्रांड नेगेटिव हो जाए. ठीक है. So if there is a campaign going against rickshaws and you're branding rickshaws, then yeah, you should not. ठीक है ना. It is you going against the norm. So you need to check that. You need to verify that. So वो ब्रांड सेफ्टी के इशू है या इस तरह की डिफरेंट चीज़ें. देन यू हैव टू सी योर ब्रांड इक्विटी. आपका ब्रांड जो है वो किस लेवल का है. यू परसीव योर सेल्फ बीइंग एप्पल, सो आई विल नॉट सी एप्पल एडवर्टाइजिंग रिक्शा. सिमिलरली आई विल नॉट सी पाकिस्तान में तो एप्पल है नहीं. आई विल नॉट सी सैमसंग एडवर्टाइजिंग ऑन रिक्शा बिकॉज सैमसंग कहता है मैं एक एलीट प्रोडक्ट. ठीक है. एंड सैमसंग विल ऑलवेज वांट टू बी एसोसिएटेड इन अ प्लेस वेयर उसके जैसे या उससे ऊपर वाले प्लेयर्स मौजूद हो. तो ही विल ऑलवेज गो टू मीडियम्स जहाँ पे वो है. लेकिन उसमें भी शर्त है, वो आगे बताता हूँ. सो ये तो होगा आपके ब्रांड इक्विटी एंड ब्रांड सेफ्टी. नाउ जो तीसरी चीज़ जो आपको देखनी होती है वो देखनी होती है आपका अपना प्रोडक्ट. सो अगर सैमसंग 2000 रुपये वाला फ़ोन लॉन्च कर रहा है तो आई एम सॉरी वो रिक्शे पे जाएगा, बिल्कुल जाएगा, क्योंकि उसका टारगेट मार्केट है. ठीक है. सो इट इज़ अगेन नॉट अबाउट कि जी बड़ा ब्रांड रिक्शे पे नहीं जाएगा. इट इज़ अबाउट द प्रोडक्ट. See, if it's a corporate campaign, yes, Samsung will never go. Similarly, Unilever will not go. P&G will not go. But if it's a product campaign, which is for masses, so they will definitely go for it.
because it's a cheaper medium also and it is where the audience is. ये तो आपको ये क्लैरिटी दे दी. अब आते हैं हम टीवी पे. सो सेइंग टीवी जो है सिर्फ बड़े ब्रांड्स के लिए, आई एम सॉरी, इट इज़ नॉट ट्रू. Yes, TV is one of the most expensive mediums in terms of buying the ad, but उसका जो conversion है, it is even cheaper than digital and outdoor. And that's something that you taught me, because when I came to your office, I was like, TV seems so irrelevant now. No. So TV is not irrelevant. We saw a spike in digital thanks to COVID. डिजिटल पे बहुत ज़्यादा स्पाइक आया, डिजिटल व्यूइंगशिप पे बहुत ज़्यादा स्पाइक आया, सब्सक्राइबर वॉट पे बहुत ज़्यादा स्पाइक आया. सो नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन, अमेजॉन प्राइम की सब्सक्रिप्शन वेंट स्काई रॉकेटेड. दे ऑल स्काई रॉकेटेड. इवन टीवी की रेटिंग वेंट अप, बट नॉट द वे वॉट की गई है. वीडियो ऑन डिमांड्स की जितनी भी गई है वो नहीं गई उनकी, बट इट वॉज अ ग्रोथ इन कोविड. अब now let's talk about post COVID. ये कहानी मजे की थी. Now let's talk about post COVID. Post COVID में Netflix at this moment internationally क्या कर रहा है? लोगों को मिन्नतें कर रहा है, खुदा के लिए अब सब्सक्रिप्शन कैंसिल नहीं करो. ऐसा ही है. They have gone to advertisement वाला slot कि जी $5.99 का अब ad के साथ मिलेगा. We have moved towards TV वाला concept कि जी once a week episode आएगा. ये सारी चीज़ें they're moving towards the TV वाला concept. Why? Because people are gone with the whole content. जितना भी content उनके पास available था सब देख लिया. बिल्कुल. नया content आ नहीं रहा है. नया content सारा कहाँ आ रहा है? TV पे आ रहा है. So एक तो ये चीज़ हो गई. दूसरी चीज़ ये है कि when we say कि जी TV जो है वो अब irrelevant हो गया because everybody is on digital. TV irrelevant नहीं हुआ. Yes, we have seen a raise of usage of digital in the Gen Z, which is between 16 to 30, I'll say 16 to 30 maximum. इनका रेस बिल्कुल डिजिटल की तरफ है, बट टीवी इज स्टिल देयर. सो एट दिस मोमेंट वी आर इन द एरा ऑफ मल्टी स्क्रीनिंग. व्हेन वी गो होम वी सेट, टीवी चल रहा होता है, लैपटॉप गोद में होता है, फोन हाथ में होता है, एंड इट इज जस्ट नॉट मी, इट विल बी माई वाइफ, माई ब्रदर, माई सिस्टर, योर सिस्टर, योर डैड, यू नेम अ पर्सन. अपने से हट के भी देख लो. सो सिमिलर. अच्छा चलो, ये तो मैं कह रहा हूँ कि यू एंड आई फॉल इन SEC-A-B कि जी हम पढ़े लिखे हैं, हमारी एक X अमाउंट से ज़्यादा तनख्वाह है. सो SEC-C-D में भी यही है. दे हैव अ फोन, सो दे हैव मल्टी स्क्रीन. अब सबके पास फोन माशाल्लाह से थैंक्स टू दीज टेलकोज अब वो डेटा पैकेजेस हैं. सो दे वॉच एवरीथिंग ऑन यूट्यूब, बट दे स्टिल हैव TV. सो या नॉट लाइक यू एंड मी हैविंग one TV per room. They have one TV per household, but TV is there. Right. So TV is there. Multi-screening की तरफ जाते हैं. So now I believe multi-screening, rather than decreasing the TV's involvement, it is increasing it. And we have seen these cases कि कोई ad TV पे आया है. So thanks to multi-screening, I don't get up and leave the room. So normally क्या होता था, one TV household होता था, single screen होती थी. जब TV का ad आता था तो मैं उठ के चला गया कमरे में कोई काम करने, या कोई और चला गया, या बेगम उठ के किचन में चले गई, एंड दिस एंड दैट. सो थैंक्स टू मल्टी स्क्रीनिंग आई डोंट गेट अप, आई एम वर्किंग, टीवी इज ऑन. और अगर कोई ऐड आया, सो नाउ ऑलवेज रिमेंबर, मार्केटिंग में यू टेक साउंड्स, यू टेक म्यूजिक, यू टेक कलर्स, यू टेक वीडियो. ये जो एनिमेशन वगैरह चल रही है जो भी सामने, सो ये ऑल एंड द कलर्स, दीज मैटर. सो म्यूजिक रिकॉल देता है मुझे. वाइल आई एम वर्किंग आई विल रिकॉल ये ऐड किस चीज़ का है, और मुझे उस वक्त याद आ सकता है कि यार मुझे ये बाय करना था, तो आई कैन पिक अप माई फोन एंड आई कैन बाय. हाँ, ये ठीक है. सो इट इज बेसिकली नाउ मेकिंग अ पर्सन बाय देयर एंड देयर. सो देयर इज अ स्टडी डन बाय मीडियाकॉम वेव मेकर इन UK. कार्चर ब्रांड है, यू नो अबाउट दैट. कार्चर, बिल्कुल. सो कार्चर का इन्होंने दिखाया कि कार्चर की सर्च दिखाई कि इन्होंने डिस्प्ले पूरा डेटा अवेलेबल है, ऑनलाइन अवेलेबल, यू कैन सर्च इट. कार्चर का डेटा इन्होंने दिखाया कि जिसकी सर्च कितनी हो रही थी डेली, एंड व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ टीवी एंड सर्च. सो इट वाज अ सिग्निफिकेंट राइज इन द सर्च व्हाइल दे वर रनिंग द टीवी कैंपेन. या नाउ अगर दूसरी तरफ आते हो, let's talk about digital products. Spotify,
one of the biggest spenders right now on TV. हाँ ये एकदम से क्या हो Why? गए? Why? Billboards, TVs. ठीक है, Daraz, it is still one of the biggest advertisers on TV, especially when they're having their 11-11 campaigns or 12-12 campaigns or New Year campaigns or anything like that. So it's on TV and it's heavily on TV. So these are two little examples of two big giants. You know, Warna Food Panda is there. It's an app, it's a digital thing. But why TV? Acha, why I'm saying TV is not expensive for anyone is because you need to work on your ad. So internationally, sub move kar gaye to 10 seconds and 15 seconds ke ad pe. Nobody's telling you to make a 60-second ad. Nobody wants to see a 30 or 60 seconds long ad anymore. When you can pass on your message within 10 or 15 seconds. So work on the frequency. Go on the quantity game. Rather than having one ad of 60 seconds, run 4 ads of 15 seconds in the same price. बिल्कुल. So you will get different ad slots. Rather than going to the prime time, you can go for the pre-prime and post-prime, which are, I'll say, दोपहर का time, रात का time. You will get your audience. Yes, you will not get the prime time wali audience, but you will get that. Your numbers, your CPM will be cheaper. Basically, in television, we call it cost per thousand. Your cost per thousand will be cheaper than your CPM on digital, which is again cost per thousand. So it will be cheaper. And your daytime and your late nights are cheaper rates. मगर रात में viewers होते हैं. बिल्कुल होते हैं. So I don't know if you've seen the rating system. So there's a company called Kantar, it's an international company, Kantar, उनका rating आता है. So if it says कि जी, now again, as I said, बहुत ज़्यादा issue होता है brand persona पे. So if you have identified your brand persona perfectly and if your product, you say कि your product is male, female, 18 to 35 and it is perfect. So आप Kantar पे जाएंगे, if you have the research tool, you will select male, female, 18 to 35. You will select your target audience, you will select your time frame कि यार मुझे last 15 days का 18 to 35 का data दे दो. All channels. Hourly दे दो, 15 minutes दे दो, 5 seconds दे दो, it will give you everything. You can pinpoint exactly where your ad needs to be. And you can then ask the television channels, जो channel आपको चाहिए अपने mix में, कि यार मुझे यहाँ ad चाहिए. So you have the data ना. The only difference is वो feature नहीं, वो past दिखा रहा है, but वो एक आपको trend दिखा रहा है. You take up 1 month का trend, you take 2 months का trend, you will get a vague idea कि यार कौन सा वाला slot ऐसा है जहाँ पे मेरा product बेहतर perform करेगा. You put it there, see, check the return out, go more. So you need to have the TV now. It is more important because if it is not part of your mix, you will lose. So all your digital campaigns, digital campaign का सब मसला ये है कि there is a lot of mistakes you can do. Running a digital campaign is not easy. एक हल्की सी भी selection आपकी आगे पीछे हो गई, you will lose. And it will cost you very much. On the other hand, TV will not. और TV से एक और फायदा है जो हमारी आज के लोग भूल जाते हैं, जो साथ especially the digital people who think कि हमें नहीं जाना चाहिए टीवी पे. I'll be honest because it's a hard truth. एक ऑडियंस होती है जिसको कहते हैं हम स्पिल ओवर ऑडियंस. सो व्हेन यू आर कमिंग टू टीवी यू से क्या है मुझे 1835 के लोग चाहिए, मुझे इस स्लॉट में चाहिए. सो यू आर टारगेटिंग एंड यू आर कैलकुलेटिंग योर CPM, योर कॉस्ट पर 1000 ऑन दैट ऑडियंस. बट रिमेंबर देयर इज अ स्पिल ओवर ऑडियंस बिकॉज यू कैन नॉट कट देम ना. वो टीवी देख रहे तो मैं ये नहीं बोल सकता ना आप आंखें बंद कर लो, तो वो देख रहे. So there's also a possibility कि 1835 आपने टारगेट किया, उस वक्त 1835 के जो भी लोग हैं, I'll say 2 लाख लोग देख रहे थे 1835, लेकिन उनमें से कन्वर्जन सिर्फ 15% ने की. But there were also another sect which was watching, which was 36 plus. ठीक है, उधर से आपके पास कन्वर्जन आ गई 25% because they have the buying power. बिल्कुल. एंड माशाल्लाह से आई विल से राइट नाउ पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे हैं लोग जो डिजिटल सेवी हैं. ठीक है, 35 प्लस भी डिजिटल सेवी है. मैं ये नहीं हम ये नहीं बोल सकते कि जी 35 प्लस हमारे बिल्कुल ना फ़ोन यूज़ करते हैं ना उनको डिजिटल आता है. दे आर वेरी मच डिजिटल सेवी. तो उन्होंने वहाँ से किया. सो बीइंग अ ब्रांड कस्टोडियन यू विल बिलीव कि यार मैंने जो टारगेट ऑडियंस की है वहीं से आ रहा है मेरे पास.
तो मुझे जो 35% मेरे पास जो आया है रेवेन्यू, ये मैंने वहाँ से लाया. तो आप स्पिल ओवर ऑडियंस भूल गए. When you do the same on digital, so you eradicated me because I'm 35 plus. वो तो कभी भी नहीं दिखा सकता आपको ऐड. मुझे कभी भी नहीं दिखाएगा. So now your income will be the 10% or the 15%. So that is why I'm saying कि brand persona बहुत ज़रूरी है पता होना exactly. टीवी से फ़ायदा ये होता है कि स्पिल ओवर ऑडियंस हम काउंट नहीं करते, लेकिन इट्स अ मेजर पार्ट ऑफ योर एडवर्टाइजिंग, इट इज़ मेजर पार्ट ऑफ योर रेवेन्यू इंक्रीज. वो हम लोग मिस कर जाते हैं टीवी पे. तो इसलिए टीवी इज़ most important to be part of your marketing campaign, including digital. I'm not saying digital is not. Digital is there. Digital is growing. But TV is also there and TV is there to stay. TV is not going anywhere. And I think हमारे यहाँ स्पेशली शायद पाकिस्तानी मार्केट में ये है कि जैसे अमेरिका में तो ये ना कि मॉल ट्रेंड्स इतनी अब बदल रहे हैं कि मॉल्स अब बंद हो रहे हैं. तो मॉल्स को अगर हम टीवी के तौर पे लें और नए ई-कॉमर्स स्टोर्स को हम डिजिटल वाले लें, तो पाकिस्तान में लोग बायर्स बड़े जा रहे हैं क्योंकि डिजिटल ऑडियंस हमारी बढ़ रही है, मगर वो सब अभी टीवी वाले हैं. हो सकता है आज से 10 साल के बाद थोड़ा डिफरेंट मार्केट शेप में हो. Maybe. But after 10 years, maybe. But right now, जो मैं देख रहा हूँ वो ये है कि हमारी ऑडियंस में भी ये वाला इशू है. यार जब तक लाइक जैकेट लेनी है, यार जब तक मैं देखूंगा नहीं, फील नहीं लूँगा तो बाय नहीं करूँ. जूता या जब तक पहनूंगा नहीं, फील नहीं लूँगा बाय. या हाँ, when we talk about Nikes and Adidas, तो यहाँ ये बाय कर लेंगे ऑनलाइन. बट when you say कि यार ये XYZ ब्रांड है लोकल, इसकी जैकेट है, लेदर जैकेट, इट्स अमेजिंग जैकेट, यार यू शुड ट्राई. अच्छा, नहीं दुकान का है. तो फर्स्ट आंसर क्वेश्चन यू विल गेट, नहीं दुकान का है. व्हाई ही वांट्स टू वैलिडेट कि यार ये है कि नहीं है. ठीक, उसका रीजन ये, आई विल ऐड वन मोर थिंग इन इट. इसका रीजन एक और है, इट बिल्ड्स ट्रस्ट. सिमिलरली टीवी पे जब ऐड आता है वो इट बिल्ड्स द ट्रस्ट, वो लेजिट आता है. उसका रीजन ये है कि डिजिटल पे होक्स बहुत हो रहे हैं. सो देयर आर पीपल जिनको डिजिटल पे ऐड देखा, उन्होंने देखा, दे लाइक द प्रोडक्ट, दे बॉट इट, बट इन द एंड प्रोडक्ट जो आया वो कुछ और ही था. कुछ और. एंड माशाल्लाह से हमारे पास देयर इज नो आफ्टर सेल सर्विस, देयर इज नो रिटर्न वगैरह का सीन. सो यू आर स्टक विद इट, यू हैव वेस्टेड योर मनी. टीवी का सीन ये है कि देयर इज अ ट्रस्ट ऑफ ऑडियंस कि अगर ये टीवी पे आया है दैट मीन्स कि यार ये प्रोडक्ट लेजिट है क्योंकि इसने खर्चा किया है. टीवी इज नॉट अ चीपर मीडियम टू बाय. येस इट इज चीपर व्हेन यू हैव द कॉस्ट पर 1000, जो आप देखते हैं कि आपकी कितनी व्यूअरशिप आई है, उस हिसाब से तो यह सस्ता है. बट टू गो एंड बाय इट, इट इज़ नॉट चीपर. सो टीवी से ये आपको एडवांटेज होता है. सिमिलरली एज आई सेड कि हमारा पहला सवाल होता है जब लोकल प्रोडक्ट देते हैं, इसकी दुकान कहाँ है, वो एक ट्रस्ट बिल्ड होता है कि इसकी दुकान है यानी कि लेजिट होगा ये. ठीक है ना. दुकान कहाँ है जी, अगर दुकान इसकी डिफेंस में या गुलशन में, ठीक है. अगर दुकान इसकी जोड़िया बाजार में इधर है तो वी विल से अच्छा ठीक है यार बाद में देखूंगा. सो दीज आर द थिंग्स विच मैटर्स. और हमारी अभी तक थोड़ा टाइम लगेगा हमें इवॉल्व करने में, लेकिन येस स्लोली एंड ग्रेजुअली वी विल गेट देयर. वेरी ट्रू. तो मेजर डिफरेंस जो है टीवी में और डिजिटल में ये कि कॉस्ट ऑफ एंट्री इज़ लार्जर व्हेन इट गोस टू टीवी. सो बिजनेस जब एक बड़ा थोड़ा हो जाए देन, अच्छा जैसे टीवी पे कहते हैं कि जो चीज़ आ गई वो लेजिट है, मगर देयर स्टिल सम हुक्स जो होते हैं. जैसे कल गलती से मैंने पता है कि रैंडम से चैनल खोल लिया क्योंकि मैंने क्रोमकास्ट नहीं चल रहा था. टीवी तो कभी खोलता ही नहीं हूँ, लेकिन वो गलती से खुल गया. तो उसमें एक पुराने सैमसंग का ऐड आ रहा था और अभी भी आ रहा था, जो आज से 10 साल पहले फ़ोन लॉन्च हुआ था. वो रिफर्बिश करके बेच रहे हैं और उसका ऐड नया उन्होंने जो उर्दू की मुझे नहीं, पहले लोग खड़े होते थे एक साइड के आगे और वो बेचते थे, सिर्फ 10 बाकी हैं, सिर्फ 5 बाकी हैं, उस तरह का. तो अगेन टीवी पे भी यस देयर आर थिंग्स, बट आपको उस पर लेजिटिमेसी ऐसे मिल जाती है कि यू नो द चैनल. हाँ, सही. जो ट्रस्ट होता है ना वो होता है चैनल के साथ. सो अगर कोई चीज़ एक टियर 1 चैनल पे आ रही है तो यू हैव अ ट्रस्ट देयर. अगर एक चीज़ टियर 3 पे आ रही है सो यू थिंक अबाउट इट. अगर रीजनल चैनल पे कोई आ रही है यू थिंक अबाउट इट, बिकॉज़ दोज आर चीपर प्रोडक्ट्स. awesome. ये चीज़ें देखनी पड़ती हैं आपको भी, लेकिन या देयर इज ऑलवेज अ ट्रस्ट ऑफ ऑडियंस विद द टीवी चैनल. बेहतरीन. What kind of mistakes do you see, especially? So we've seen a very, very large pool of money coming into Pakistan with startups. Let's talk about startups. Or abhi we were talking about agri-tech startups, and then
them not being very successful. अच्छा पिछले हफ्ते my dad went to an event and met the founder of, let's say, one of the largest B2B startups right now. I don't want to say the name, but my dad didn't even know that they raised $38 million. Now मेरा अब्बा जिसके पास 14 मिलियन लोग हैं, कुछ टेक में हो जाए उनको पता होता है. He didn't know about that. तो आपके ख्याल से what are the major lackings up with the startups right now, including Daraz, including Bejar, Dastagir, Taza, Crave Mart, Airlift, कि इन्होंने क्या चीज़ें ads में ये लोग गलतियाँ कर जाते हैं? See, I will again say कि जो startups वगैरह का जो issue आ रहा है ना, that is they have not identified their market properly. See, they have not identified their brand persona properly. ले तो आए प्रोडक्ट, कर लिया, एग्जीक्यूशन में चले गए, एंड इट्स एन अमेजिंग आइडिया, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, फंडिंग मिल गई, दे वेस्टेड दैट फंडिंग. बहुत सारे स्टार्टअप्स ने, आई विल नॉट नेम, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा यार फंडिंग आ गई, पहले तो अपना प्रॉफिट बाहर करो, अपना प्रॉफिट बाहर करो, जो हमने 1.5 साल 2 साल की मेहनत की वो बाहर करो, अब ये बच गया इसको इन्वेस्ट करते हैं. सो दैट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक्स. ठीक है, ये नहीं करने की जरूरत थी आपको. यस, यू कुड हैव केप्ट योरसेल्फ ऑन सैलरी एंड मेड इट बिगर, बट यू डिडंट डू दैट. तो ये बहुत सारे हमारे अपकमिंग स्टार्टअप्स हैं जिनके साथ लालच वाला फैक्टर अभी तक थोड़ा है. वो है, थोड़ा नहीं, वो काफ़ी है, और हम शॉर्ट टर्म मनी मेकर्स हैं. हाँ. तो हमें ये इशू रहेगा हमेशा से. उसके बाद जो इशू आता है वो आता है कि हमने अभी तक अपनी ब्रांड पर्सोना, अपनी ब्रांड आइडेंटिटी प्रॉपर आइडेंटिफाई नहीं की, हमारी टारगेट मार्केट प्रॉपरली आइडेंटिफाइड नहीं है. एयरलिफ्ट की एग्जांपल देता हूँ, तो एयरलिफ्ट केम विद अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट. सर्ल और एयरलिफ्ट दो ही थे जो आपस में कंपटीशन कर रहे थे, एंड कोविड हो गया, अग्रीड, सबके साथ प्रॉब्लम आई, वेंट डाउन, बट इट हैड फंडिंग, इट कुड हैव सस्टेन्ड, इट डिडंट सस्टेन बिकॉज दे वेस्टेड मनी. एंड जब कोविड के बाद जब वापस स्टार्ट हुए, so they moved their business completely. They moved towards e-commerce. वो चले गए जी, हम आपको सब्जियां पहुंचाएंगे, मतलब आपको सब्जियां पहुंचाएंगे, और लॉस एक और उसमें चलेगा, which is a difficult, already difficult market है वो to cater, and it's not easy in Pakistan to cater these markets. बिल्कुल. तो आप उसमें चले गए without seeing कि मार्केट क्या है, कितना डीप है, how deep is the sea. You just jumped in because you had the investment coming in, and you just dived in. That was a mistake. खैर, I don't know कहाँ गए. As you said, agriculture startups के साथ प्रॉब्लम ये है कि हमारे एग्री स्टार्टअप्स आ तो रहे हैं, जितनी तेज़ी से आ रहे हैं उतनी तेज़ी से बंद भी हो रहे हैं, बिकॉज हमारे पास एग्रीकल्चर का कॉन्सेप्ट फ़र्क है, पूरी दुनिया में कॉन्सेप्ट फ़र्क है. वो ऑटोमेशन की तरफ जा रहे हैं, उनकी मशीनरी है, हम अभी तक हारी, आरती और फार्मर के अंदर फंसे हुए हैं. ठीक है, जो हमारा फार्मर है वो अभी तक सबसे लेस पेड पर्सन है, उसके पास पैसे नहीं होते हैं, वो उधार पे बीज लेता है, वो फार्मिंग करता है, वो करता है. सो व्हेन यू गो एंड टेक योर स्टार्टअप्स देयर, एग्री स्टार्टअप्स लेके जाते हैं, आप करते हैं, तो उसको समझ नहीं आता, बिकॉज ही इज़ नॉट एजुकेटेड, उसको आप समझा नहीं पाते, बिकॉज आप उसकी ग्राउंड लेवल पे आ नहीं रहे. यू नीड टू कम डाउन एंड अंडरस्टैंड कि उसका प्रॉब्लम क्या है. So once his problems are solved, yes, then agriculture startups can perform. Yeah. लेकिन अगर उसकी प्रॉब्लम समझ नहीं आ रही है आपको, आप नहीं समझ रहे, तो नहीं होगा. So yeah, again, as you said कि they raised enough money. Agriculture startups का issue यही है कि they are not going the ground reality. They are not understanding कि हमारे farmers के साथ क्या issue. Once they understand that, then they will be able to pursue the culture they want. So US हो गया, UK हो गया, जितने भी टॉप एग्रीकल्चरल कंट्रीज हैं इंक्लूडिंग इंडिया, दे हैव मूव टुवर्ड्स ऑटोमेशन. बिल्कुल. दे हैव मेजर इंडस्ट्री. ठीक है, वो जो प्रोडक्ट उनको चाहिए, एक फार्मर होता है 20 एकड़ 30 एकड़ संभाल रहा होता है, एक बंदा, बिकॉज उसकी एक मशीन होती है जो मल्टी मशीन होती है. उसमें अभी उसने आगे पाव के लिए लगाया, वो निकाला, क्ले के लिए लगाया, वो निकाला, सीडिंग के लिए लगाया, वो निकाला, फार्मिंग के लिए लगाया. सो हमारे पास वो नहीं. हम आज तक वही 1960 के ट्रैक्टर बेच रहे हैं, किसी ये ट्रैक्टर ले ले, ये आप चलाए, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल. आप हाथ से अभी तक बीज लगाते हैं, आज तक हाथ से बीज लगते हैं. वो आज तक, अभी तक हमारी, अगर आप गंदम की बात करें तो वो जो गट्टे बनते हैं वो आज तक हाथ से बनते हैं. पूरी दुनिया ऑटोमेशन पे जा चुकी है, कॉस्ट कटिंग पे जा चुकी है, हम वहीं, जिसकी वजह से
जिसकी वजह से वन ऑफ द मेजर रीजन इज कि व्हेन यू गो एंड यू से कि मैंने प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना है, so when you export your rice and India exports their rice, when it lands in Middle East, your product is more expensive than Indian product, though Indian product is coming from a longer route, तो उनका ट्रांसपोर्ट महंगा होना चाहिए, बट योर प्रोडक्ट इज एक्सपेंसिव बिकॉज आपकी इंटरनल कॉस्ट इतनी है ना, आप अपनी इंटरनल जो फजूल की कॉस्ट है ये माइनस ही नहीं कर पा रहे. I was looking at, so I was at an event with the ex-governor of Sindh, and he was telling about how we have हमें food shortages हो रहे हैं, इतने सारे problems हैं, and then he was governor in 1980s. फिर मैंने डेटा निकाला उधर ही बैठे बैठे गूगल पे कि जी पाकिस्तान की पॉपुलेशन क्या थी उस वक्त. तो उस वक्त 80 मिलियन लोग थे और आज 240 मिलियन है या 220 जितने भी. हमारी उस वक्त फूड प्रोडक्शन थी 22,000 टन्स ऑफ वीट एंड नाउ इट्स ओनली 23,000 टन्स. ऐसे ही. एंड हमारे पास एरेबल लैंड इतना है और हम वी नॉट डूइंग एनीथिंग अबाउट इट. हमारे प्रोसेसेस इतने स्लो हैं कि See, the thing is कि हमारे प्रोसेसेस स्लो हैं, फिर हमारे पास रिसर्च नहीं है. I should not take the country's name, but I will. Israel. oh definitely. ठीक है, they have made jungle in a bloody desert. ठीक है, drip irrigation और pondponics वगैरह इन्होंने किया है. एरोपोनिक्स है, हाइड्रोपोनिक्स किया है इन्होंने. We are not following them. So the research is there, everything is there, it is available online. All we have to do is make sure that the products जो चाहिए पाकिस्तान में वो available हो हमारे farmers के लिए easily. उनको हम train करें. As country, as government, they should go and train them. See, हम खुद कह रहे हैं कि पानी नहीं है हमारे पास, पानी ख़त्म होने वाला. ड्रिप इरिगेशन पे जाएं, एक्वापोनिक्स पे जाएं, बिकॉज उसके अंदर पानी कम यूज़ होता है. एंड द बेस्ट थिंग इज कि अगर आपके पास 14 एकड़ है तो वो आपको 40 एकड़ का देगा कंटेंट. बिल्कुल. सो दैट इज वेयर वी नीड टू गो. वी आर नॉट गोइंग देयर. सो वी आर यूजिंग एक्स्ट्रा लैंड, वी आर वेस्टिंग दैट, वी आर वेस्टिंग द यूरिया एंड द नाइट्रोजन ऑफ द लैंड, वी आर वेस्टिंग द वाटर. आज भी व्हेन आई गो टू माई विलेज, आज भी हम अंगूरों को पानी देते हैं, यूं करके पानी खोलते हैं और यहाँ से वो जितनी जहाँ ज़मीन है वो सब अंगूर में पानी 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 है. दैट इज़ वेस्टेज. दैट वाटर इज़ बीइंग वेस्टेड, बट वी डोंट हैव अनदर वे. सो ये इश्यूज़ हैं. अभी यस पाकिस्तान में टनल फार्मिंग शुरू हुई है, बट वो भी अभी उस तरह नहीं स्टार्ट. बहुत छोटे स्केल पे लोगों को सिखाई नहीं जा रही है. सी दीज थिंग्स नीड्स टू बी एजुकेटेड. So, हमें चाहिए कि जिस तरह कोविड सिखाया था उस तरह हम हर चीज़ ये चीज़ सिखाएं, स्किल सिखाएं. ये इसके अंदर हमारे पास बहुत सारे इश्यूज हैं एंड आई डोंट वांट टू गो इन दोस, बट यस इट शुड बी देयर. द ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस, वी नीड at least 10 million people more going into agriculture जाके वो mistakes करें and then they don't even need to make mistakes. See, the thing is, मैं वापस भी बोलूँगा, हमारे farmers are not educated. ठीक है, बाकी जगहों पे वो अपने फार्मर्स को सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, उनकी ट्रेनिंग होती है, ऑनलाइन ट्रेनिंग होती है, उनके पास बंदे जाते हैं, उनको ट्रेन करते हैं. इफ़ यू रिमेंबर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, निक्सन का आ रहा था एक इसका, दे सेड वी विल ओनली ग्रो कॉर्न. दे ग्रू कॉर्न लाइक क्रेजी एंड दे मेड श्योर दैट कॉर्न ऑयल एंड कॉर्न सिरप एंड कॉर्न XYZ was used in everything in the whole country. That was the reason कि they wanted to sustain their economy. वो cycle बनानी थी इन्होंने. They made that cycle. They trained their farmers to grow that corn and how to grow those corns. हमारे पास वो नहीं है, हमने identify नहीं किया. Now FIFA हो रहा है. Let's divert towards that. Okay. FIFA हो रहा है. How many balls have we sent? FIFA की football. जो सियालकोट से गई हैं. पता नहीं. More than 3 million. Oh my God! What? Yeah. We should be right now, every household should be making a football, FIFA ka. We should have a whole factory dedicated to FIFAs. But the factory, we need a whole city at the moment. Where is it? You pick up countries like Netherlands, you pick up countries like Poland, you pick up countries like Switzerland. What they have done is they have identified themselves in expert in one product. ठीक है ना? And they have ensured the whole country makes that product and exports it. I know that
like in South America, I think Cuba, everyone knows how to roll a cigar. Why? Because they said कि we want a SMC, small medium company in every household. Yeah. Make a cigar, pack it, export it. We don't want it. So at this moment, right now, पूरा सियालकोट FIFA football होना चाहिए. Similarly, when cricket is there, you are one of the major participants in making the amazing bats and balls, and वहाँ use भी होती हैं. Why isn't there a city for that? Why aren't you guys exploiting that? Why don't I see a cricket expo happening? Why don't I see FIFA expo happening? जहाँ पे ये products आप display करें, sell करें. Invite other countries, come over, see our products, orders ले. Taiwan, आधी दुनिया उसको कंट्री नहीं मानती. बिल्कुल. ठीक है, आधी दुनिया कहती है इट्स एन इंडिपेंडेंट कंपनी, आधी दुनिया कहती है नहीं इट्स पार्ट ऑफ चाइना. ठीक है, ये अभी तक पता चला. ताइवान इज द बिगेस्ट एक्सपोर्टर्स ऑफ बाइसाइकल्स. यू नेम अ ब्रांड, द फैक्ट्री इज इन ताइवान. बियांची चिप्स बनाते हैं. बियांची, इट इज एन इटालियन ब्रांड मेड इन ताइवान. कैननडेल, इट्स अ यूरोपियन कंपनी मेड इन ताइवान. जायंट, made in Taiwan. You name a brand, specialized, made in Taiwan. I only remember 2 bicycle companies being made in Germany, which is Canyon and crap, I forgot the name. So the thing is, they saw the potential. They said कि यार हम लोग बहुत अच्छे हैं साइकिल बनाने में. Let's go into it. Every year उधर bicycle expo होता है. Every year. Like there's a Silicon Valley, every year वहाँ पे Silicon Valley में tech startups का होता है. इसी तरह वहाँ पे every year bicycle expo होता है, and they invite the whole world to come see their bicycles and give orders. So if you want to start your own company, you don't need to have a company registered in Taiwan. You have to just go fly there, talk to them, place your order, give your brand. They will make it for you. They have all the sizes. They have all the details. You will just tell him कि मेरा इतना बजट है, मुझे इस बजट में इतनी साइकिलें चाहिए, इतनी मुझे रोड बाइक्स चाहिए, इतनी एमटी माउंटेन बाइक्स चाहिए, इतनी हाइब्रिड चाहिए, या मुझे सिर्फ हाइब्रिड चाहिए, मुझे सिर्फ. They will make it for you. They will take you. Their factories are smaller than this room. जिसमें साइकिलें बन रही हैं. It is complete automation. So that's where they exploit it. So right now we are not exploiting football. We are not exploiting cricket. At this moment, FIFA पूरी दुनिया देख रही है. So we can have our flag registered there. We have it in the form of ball, पर लेकिन वो सिर्फ word of mouth है. हाँ यार पाकिस्तान से बॉल आई. वो सर हमें ही पता है कि जो पाकिस्तान में बन रही है, बाहर वालों को नहीं पता. ठीक है ना, पाकिस्तान से बॉल आई. That's it. और वो बॉल भी पाकिस्तान से जो गई है, I was reading about it, उस पे पर बॉल लेबर कॉस्ट 160 रुपए है. यस, बस लेबर कॉस्ट. ठीक है, 160 रुपए, एंड 32,000 रुपीज की बिक्री है. 32 to 36,000 रुपीज की बिक्री ऑफिशियल बॉल, और 160 रुपए लेबर कॉस्ट है. मैं कहता हूँ बाकी मर्चेंडाइज लगा लो, सब कुछ लगा लो, 5,000 रुपए की होगी. 32 to 36,000 रुपीज की सेल हो रही है इस वक्त. इफ यू वांट एन ऑफिशियल बॉल चिप वाली, 32 से 36,000. Imagine the difference. That's how it works. So you need to exploit those areas. So it's just not about FIFA. So UEFA में आप डाल सकते हैं, Premier Leagues में डाल सकते हैं. So there's a lot of potential. So we are not exploiting this. Even with textile, like we make all the brands. I will not go into textile. वो तो सब बंद हो रहे हैं, thanks to our electricity and hydro and sui gas. But we're not making our own private label. So there's a very good example. I don't know if you. So my dad made a video on Utopia Industries. Have you heard of them? Yeah. So they're doing phenomenal. We need to do that. मतलब हमारे अपना फीफा की बॉल जो है हमारे ब्रांड से तो नहीं जा रही, एडिडास या किसी से जा रही है. एडिडास से जा रही है. अगर अपना ब्रांड हम साइट पे एस्टैब्लिश करना शुरू भी नहीं कर रहे, बिकॉज हमें इस जंजाल में कौन पड़े. ब्रांड नाम बनाना है, एस्टैब्लिश करना है, उसको पूरा उस पर वर्किंग करनी है. व्हाई व्हेन वी कैन बी अ रिटेलर, वी कैन ऑलवेज सेल इट कि हाँ यार 7 को मैं दे रहा हूँ, 7 जाने 7 अकाउंट जाने.
मुझे मेरे पैसे बाहर मिल रहे So हैं. let's talk about this. You're in marketing. All the brands come to you because you're in Bol. What are the main challenges when a factory wants to start their own or a company wants to start a new product? क्योंकि जैसे लिप्टन है, वो लिप्टन कोई नया प्रोडक्ट निकालती है या यूनिलीवर नया प्रोडक्ट बनाती है, so you know all the insights. If there's a fact, क्योंकि जैसे मैं दिल्ली वाला हूँ, मेरे सारे रिश्तेदार की फैक्ट्रियाँ हैं, मगर उसमें से कोई एक नहीं है जो मास स्केल पे अपना प्राइवेट लेबल चलाता हो. See, there's an issue of distribution, supply chain. मगर वो सब तो सॉल्व हो चुका है ई-कॉमर्स के थ्रू. नहीं हुआ ना. तो चले पाकिस्तान में ना बेचे, पाकिस्तान से बाहर ई-कॉमर्स के थ्रू सॉल्व. अब the thing is कि vision होना चाहिए. Investment. See, the major thing is investment. I know when Saad is there, मैं 10 रुपए की चीज़ बना रहा हूँ, Saad मुझसे 20 रुपए की खरीद रहा है, मुझे पता है ये फिनिश करके मैं Saad के पास पहुंचूंगा, ये सेल हो चुकी होगी. Not knowing is the issue. कि मैं 10 रुपए की बना रहा हूँ यार, ये 20 रुपए की बिकेगी या 15 रुपए की, ये मुझे नहीं पता. आज बिकेगी, कल बिकेगी, परसों बिकेगी, मुझे नहीं पता. होल्डिंग पावर जिसको कहते हैं हम, होल्डिंग पावर इज द इशू. नन ऑफ आवर इन्वेस्टर्स वांट टू होल्ड. दे से कि ये आया, निकालो, अगले पे जाओ. So holding power is where we lack. And that's where China succeeded. That's where China succeeds, still succeeds. See, जिसके पास होल्डिंग पावर, इसके अंदर मैं एग्जांपल देता हूँ हमारे रियल स्टेट का. इन द केस ऑफ रियल स्टेट हमारे पास होल्डिंग पावर है बहुत. 10 करोड़ की जमीन खरीदेंगे यार, पैसे नहीं आ रहे, रोक लो, अगले साल देखेंगे. इतना होल्ड करते हैं, हमारे कराची अनसस्टेनेबल हो गया. दैट्स द इशू. सो सवाए रियल स्टेट के हमारे पास किसी और प्रोडक्ट में, किसी और इंडस्ट्री में होल्डिंग पावर नहीं है. वी डोंट वांट टू, बिकॉज हम कहते हैं यार ये खराब हो जाएगा प्रोडक्ट, ये बिकेगा नहीं, चलेगा नहीं. सो तुम्हारे केस में नहीं, लेकिन नॉर्मली व्हेन पर्सन सेज कि यार मुझे स्टार्टअप स्टार्ट करना है या मैं अपनी काम करना चाहता हूँ या अपनी इंडस्ट्री लगाना चाहता हूँ, द फर्स्ट पीपल हु टेल हिम नॉट टू आर द फैमिली मेम्बर्स. नहीं, पागल हो, लॉस हो जाएगा, बेड़ा गर्क हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा. वी नेवर एनकरेज दैट. हम अगर फुप्पी के बेटे ने किया हो तो फिर सक्सेस वो आ जाता है ना, क्योंकि उनके पास वो होता है समथिंग टू बैक इट अप. या सो एक तो वही कह रहा हूँ तुम्हारे केस में या एग्जाम्पल. तो मगर हमारे, तो आपके ख्याल से ये व्हाट आई फील इज कि हमारे पास सबसे बड़ा मसला है यकीन का. एंड योर फैमिली मेंबर विल नॉट बी द फर्स्ट वन टू बाय फ्रॉम यू. हाँ, अ स्ट्रेंजर विल बी द हमें फर्स्ट पता पर्सन टू होना बाय फ्रॉम यू. व्हाई? ये हमारा मसला है. सो इफ माय ब्रदर स्टार्ट्स, ये हमारा नॉर्म है कि I will not be the first person to buy a product from him. I will be 4th, 5th, 6th, 7th, 10th down the lane. A stranger will be the person who will be giving him the trust. ये हमारे इशू है. So these are the things. और इसी वजह से जब नया लेबल स्टार्ट करते हैं, नया लेते हैं, तो वो एक ट्रस्ट नहीं होता. ट्रस्ट बिल्ड करने में टाइम लगता है. सो यूनिलीवर्स वगैरह विल नेवर मेक अ न्यू लेबल फॉर पाकिस्तान. ठीक है ना. It always has to come from a local person. In this case, I will say India has succeeded a lot. They did partnership with Suzuki. Now it's Maruti. Yeah. ठीक है ना. So they are doing that. They are bringing innovation. They are doing that. Local वाले brands बना रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं. हमारे साथ मसला ये है कि हम local brands पे जा नहीं रहे. And the only one I know is Shan and National. Shan is mashallah doing well. Shan has also launched their Dip It. It is amazing. It is one of the. अभी बीच में आया था कि Unilever was buying Shan. नहीं. I don't know. I saw something online. अभी तो the recent update was कि Lipton has left Unilever. Now Lipton Supreme has another company called Ekatara which has bought it. So Lipton and Supreme is no more with Unilever. Oh. So that's a new update which is happening in the market. So, but khair, so the first barrier to entry is कि हमारे पास यकीन और वो trust, distribution, supply chain and holding power. These are the 4 issues. You resolve these 4, you will get your labels. But yeah. And now we have such a good example of utopia कि किसी को भी, so they invite everyone with welcome hands. They want more people to export. And जब आपका ऐसा इतना अच्छा हाथ हो, so every factory, every chamber member should be visiting their factory and starting their Amazon private label immediately. Agreed. They should, but नहीं हो रहा. So when you say about private label, there's a huge opportunity. Thanks to Amazon. Why don't we have private labels in Amazon right now? You get amazing चाय की पत्तियाँ पाकिस्तान में. बिल्कुल. ठीक है, लोकल भी बन रही है. You just need to go and get it off market, brand it and send it. नहीं कर रहे. क्यों? Holding power नहीं.
बट होल्डिंग पावर है इतना, इतने तो पैसे हैं नहीं ना भाई, देखो द थिंग इज जो already established organizations हैं, they will not go into this. People who will go into this is like you and me. ठीक है, अब एक सनी अली की बात है जो मैं बहुत उसको कंसर्न करता हूँ, इज हमें किचन में फंसाया हुआ है. सो आई एम स्टक विथ माई किचन. जब तक मेरा किचन 100% नहीं चलेगा, मैं किचन में फंसा रहूंगा. या वंस आई नो कि यार मेरा किचन चलता रहेगा, आई विल डू 10 स्टार्टअप्स कि मुझे पता है इसको इशू नहीं आएगा. बिल्कुल. ठीक है, तो हम किचन में फंसे हुए, हमारा डे टू डे. सो व्हेन पीपल कम एंड से कि यार तुम ये नहीं करे, प्रॉब्लम इसके भाई वो कैसे करे, उसको कल सुबह, वो तो कल सुबह की टेंशन में चल रहा है कि सुबह नाश्ते में क्या खाना है, पैसे कहाँ से आएंगे. सो वो इसमें चल रहा है कि कल सुबह के पैसे कहाँ आएंगे, खाना कहाँ से खाना है. तो वो कहाँ से आपको स्टार्टअप पे होल्डिंग पावर देगा. दैट इज अगेन आई एम सेइंग द रीजन आई एम सेइंग होल्डिंग पावर. स्टार्टअप्स के अंदर जितने भी लोग आ रहे हैं वो हमारे माशाल्लाह से SEC BCD वाले, SEC A वाले नहीं आ रहे. SEC A से मेरा मुराद है जो एक एजुकेटेड बैकग्राउंड से, वेल स्टैब्लिश्ड फैमिली से है. ठीक है ना. BCD वाला अर्निंग हैंड टू माउथ है, मीडियोकर फैमिली से है या लोअर फैमिली से, सो उसके घर में 100 प्रॉब्लम ऑलरेडी चल रहे. So he will never have a holding power. He will try his best to do it. He will never have a holding power in it. तो ये हमारे साथ इशूज थी. इंटरनेशनली जो स्टार्टअप्स में आ रहे हैं लोग, वो एजुकेटेड बैकग्राउंड से हैं, थोड़ी अच्छी फैमिली से हैं, देन अगेन दे कमिंग फ्रॉम फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री, सो उनको सपोर्ट है उनकी कंट्री की. सो दे गेटिंग स्टाइपेंड और दे गेटिंग एनीथिंग इफ दे नॉट ऑन वर्क. हमारे पास कुछ ऐसा है नहीं. दे नीड टू अर्न, दे नीड टू सेंड देयर ब्रदर्स और सिस्टर्स टू स्कूल. They need to earn for their food. They need to earn for their breakfast, lunch, dinner, and then jumping in a startup. That's an issue for them. Oh, definitely. So, हमारी major population is young. You know that. Yeah. ठीक है, major population is between 18-30. उसमें से भी 70-80% is below poverty. So we cannot have those startups when we have them below poverty. So we need to increase our poverty rate also. So हमें basically उनकी जो bottom salaries है वो increase करनी है. It should be, I believe it should be above 60,000 for a person. Yeah, and that's the mission of our foundation. And that's good. We're working full time on this. We're working on eradicating poverty from Pakistan, from the world ultimately. So you just mentioned के हमारा minimum salary should be 50,000-60,000, and that's very true. I was just watching the post of Amir Piracha, who is the CEO for Unilever, and he said 56,000 should be the base salary for someone living in the city, and 46,000 for someone living outside the city in a tier 2 or lower district. So our whole foundation, our whole purpose now with all our organizations now is just to develop human capital, and we want to we want to make a factory for human capital for Pakistan. क्योंकि ईरान में या कतर में तेल है और वो उसको प्रोड्यूस करके निकाल सकते हैं. बिल्कुल. उसकी उन्होंने रिफाइनरीज लगाई. हमें इंसानों की रिफाइनरी लगानी, क्योंकि इतने इंसान है कि पूरी दुनिया में भी एक्सपोर्ट करते हैं, फिर भी मतलब कितने टैक्सी ड्राइवर निकालेंगे. अब हमें टेक वाले लोग चाहिए, हमें फार्मर्स चाहिए, हमें सब चाहिए. So I will say it's a very good job you guys are trying to do. It is not too late, because I will say India has already done that. Oh yes. ठीक है. So you go to a country, ऐसा नहीं होगा तुमको इंडियन ना मिले वहाँ. ठीक है. You go to a company, कौन बंदा जिसने इंडियन खाना नहीं खाया. You go to a company, it is hardly unlikely कि इंडियन ना मिले तुमको. बिल्कुल. So worldwide इंडिया ने यही किया. What they did was they trained their people, they sent them. और इंडिया की एक और चीज़ जो which I've been following is they are emphasizing their people to do PhDs. उसका रीज़न ये है कि once they do PhD, they kick them out. They kick them out of India, send them to abroad, because abroad PhDs की ज़रूरत है. हाँ. So what they're doing is they're counseling them. We do not have anybody to counsel. When I was growing up, I did not have a counsel जो मुझे बताता कि मुझे बड़े होकर क्या करना चाहिए. What kind of paths I had. India में है. So they're offering that services in schools and colleges and universities. So they're helping their future generation, which is a very positive and good thing. हमें भी करने चाहिए. But yeah, you guys are doing it good. Go for it. तो we believe कि जी हर बंदा मिनिमम 1 लाख रुपए महीना कमा सकता है और कमाएगा. और लाख रुपए कमाना is not a big issue. You just need to know कि कहाँ से कमाना है और क्या करना है. छोटी छोटी स्किल्स है. So
इसके अंदर आई विल से कि छोटी छोटी स्किल्स भी है, एंड जो एडवांटेज इसका ये है कि ये वो स्किल्स हैं जिसके लिए यू डोंट नीड टू इन्वेस्ट. यस. सो वो कहते ना यार कि मैं बिजनेस करना चाहता हूँ, मेरे पास कैपिटल नहीं है. यू डोंट नीड द कैपिटल व्हेन यू इनटू दीज थिंग्स. कैपिटल खुद आएगा, बिकॉज वो कहेगा यार मुझे ये काम करना है, ये पैसे लो. सो वो आप वो काम करके देंगे, आप वो पैसे लेंगे. सो दैट इज व्हाट आई ऑलवेज टेल माय फ्रेंड्स एंड एवरीवन आई मीट. Look into a business where you don't need to invest. Somebody else will invest it. Yes. You will do the work for them and you will get your profit out of it. Right. So it's a win-win situation. So look for those businesses. Never go कि यार मैं इधर जाऊंगा, मैं इधर 1 million लगाऊंगा तो 3 महीने बाद मैं इस पे 4 million कमाऊंगा. उसमें रिस्क ज़्यादा है. So if you want to go low risk, always go into a business where somebody else is investing and you're making profit off it. Awesome. So amazing conversation, such great tips, and I want to get the last little juice out of you क्योंकि मुझे पता है लंबा हो गया, काफी थक भी गए होंगे. Sure. So what would be a piece of advice of yours for, because we know Pakistan isn't 100% startup ready. We're still stuck at our core bread and butter problems. So much of Pakistan is malnutrition. खाना नहीं है उनके पास. What would be your core advice for a person who does have finance, क्योंकि बहुत लोगों के पैसे हैं, we're a very large population, कि वो क्या डिफरेंट करें कि they can actually 10x their money through business, क्योंकि जो पैसे हैं किसी के पास वो कारोबार कर सकता है या साइड हसल, क्योंकि अगर एक बंदा थोड़े और पैसे कमाएगा तो ही वो और इन्वेस्ट भी करेगा, वही अपना लाइफस्टाइल बेहतर करेगा. आपके पास पैसे होंगे तो अपनी गली खुद ही ठीक करा लेंगे. बिल्कुल, आपको ज़रूरत ही नहीं कि एमसी की. सो इसमें मैं बोलूँगा स्टार्टअप इज नेवर अ साइड हसल. इट इज़ नेवर अ साइड हसल. It is 110%. It needs 110% of your time. Right. Your focus. If you're focused and you have the investment, you don't need to go far. You just need to look around. There are a million things which you can do. You just need to identify them. You can't identify them, no problem. You have friends. Ask them what kind of issues they're having. Right. So I will name a startup which is doing very good is e-filer. Yeah. अभी इसको बिलबोर्ड भी लगे हुए हैं. So हम सब के साथ इशू है फाइलिंग का. आजकल तो टैक्स वाला टाइम है ना. टैक्स रिटर्न का सबका इशू है ना. So he didn't go far. He had the investment. He just looked around. He said, "Oh यार ये तो मेरा भी इशू है." दोस्त से बात की, अच्छा तुम्हारा भी ये इशू है. तीसरे से बात की, तुम्हारा भी ये इशू है. He had a small focus group. उसने कहा सबका ये इशू है. Let's go into it. So you don't need to go far to see कि यार क्या स्टार्टअप या क्या बिजनेस करना है मैंने. You need to see, you need to identify that opportunity. So वो opportunity either you can identify if you are not creative enough to identify but have the resources, find people who will identify it for you. Like in my case, I was not able to identify my skills. My ex-boss was. So similarly, if you can't identify it, find a friend, find someone who can identify it for you. So yes, so you said such a nice thing, but one thing that is in everyone's fingertips, that's a smartphone, and the whole world is in your fingertips, right? Everyone is in your fingertips. Agreed. But people still don't know how to find someone. ये वाली चीज़ आप मुझे बताएं, क्योंकि हम तो बहुत preach करते हैं, मगर what's your take on this? See, internationally you can find someone, but Pakistan, yes, we have issues. We are still learning. We are growing stages. इसमें मैं डिजिटल मार्केटिंग का ही पॉइंट बोलूँगा कि वी लूज फोकस. वी थिंक कि यार मेरा ये प्रोडक्ट है और मैं इसका टारगेट ऑडियंस हूँ तो लेट्स डू दिस. वेन एवर यू आर मेकिंग अ प्लान और यू आर आइडेंटिफाइंग एनीथिंग, consider yourself exempted from that part. Right. So if you exempt yourself and then think about it and have a small focus group, you will be able to identify all the problems you're facing. अच्छा, दूसरा हमारे मुल्क के साथ इशू ये है कि हमारे लोग जो है रिस्पॉन्सिव नहीं है. ठीक है, they will say yes मैं करता हूँ and they will vanish on you until unless they need you. Yeah. So ये कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमें इशू है. फ़ोन आपके पास जितना भी हो, they will not be responsive until unless they need you. It's a part of life. It's a life cycle. You need to work with it. I would say any startup which is working on it, they don't need to expect somebody to help them. They need to help themselves. Yeah.
they need to help themselves, they need to identify themselves कि हमारे problems क्या हैं और हमें किस तरह focus करना है. Yes, if they are not being, again I will say, if they are not being able to identify their problems, they need to find people who can identify problems for them. और उसके लिए firms भी हैं. अगर if you look beyond yourself तो आपको firms भी मिल जाएंगी who can evaluate the whole industry for you. Yeah. So yes, they charge, लेकिन उसमें ये होता है कि then you will have a direction. तो इस पे मैं यही बोलूँगा, बट बाकी आई विल, एथिक्स पे तो हम कुछ नहीं कर सकते ना, नहीं कर सकते उस पे हम कुछ नहीं कह सकते. ये दैट इज टॉट एट होम, दैट इज टॉट व्हाइल यू आर ग्रोइंग अप, दैट इज टॉट बाय योर कम्युनिटी. सो या इट्स अ सोशल प्रॉब्लम एंड आई थिंक वो भी ठीक हो जाएगा ओवर टाइम इंशाल्लाह. आई बिलीव द Gen Z which is coming in has a lot of potential and they are more focused and they believe they are more trustworthy. And they're working on building a good relationship, internal and external. So yes, I see next 10 to 12 years, not next, but after 10 to 12 years, we will be in a better place. That's what I gauge right now, but you never know. So let's see, let's hope for the best, but inshallah, we really don't know. Awesome. Thank you so much for coming. Thanks for having me, Saad. It was an interesting conversation with you. It's always a pleasure and always so much to learn. बहुत मजा आता है. And thank you for your time. No problem. We derailed a lot from the topic, but I believe we had a very good conversation. Awesome. Thanks. Allah Hafiz. Allah Hafiz. Startups, entrepreneurship, starting your own new business. Join me every week as we dive into stories, topics, and advices from the top founders, innovators, the crazy ones, the misfits, the troublemakers. Every Saturday at 4 p.m. I'll see you there.